So, good morning to all. Yeah, shall we start? Good morning, Sonis. Good morning. Today, the strength is less. Shall I start or shall I wait for others? I request kindly just drop a message on the group that quickly they can come and join. So, I hope you must have started going through with your MSCI 21. Yes, sir. Okay, great. Is there any doubt to anyone? It's a doubt. Actually, we don't have what I'm looking for. I send a mail to the center and I got a reply that these sessions are related to only practical based informations. So that's why we don't have the MSC 024. We have only three subjects. So, Okay, uh, like theory, we already know and we can actually read it out, but we need some more practical okay, information and some information related to the lab which we going to have after the term and exam. no problem. We'll go with the practicals. That is not a concern. I just want to know, like, really you are studying and you have any queries, so I can help you in that. Otherwise, we'll start with the practicals. So that's not a problem. Sir, I was not present in the first two So lectures. there is one query, or I can say I'm weak in that section, that malware section, in which we are preparing a code for virus and worm or Trojan horse. That Hmm. part is weak. If you can give some example how we can prepare and understand any malicious code that we written, No problem. that will be I'll give you the live examples for that, okay. right? So that's not a issue. Anything else? And sir, from the last block related to the operating systems, like Uh, I am new to how we design it, what are the basic things we need to take care when we are concerned about the security and like hacking any operating system. okay. So let us quickly start. I think so. Right. You have a concepts of operating system in fourth, and then you said about how about I think first unit and second unit we I think we discussed about some couple of units from block 2 and block 1, right? There is a concepts of network security. So let me quickly go through what is the topic only. I just want to know about your topics and we'll start. Security threats, malware. Okay. In your unit 2 you have the concepts of malware, right? So I think let us start with the malware in that case. Yes. Right, we have a unit 2. I just open a unit 2. I'll just let me share a screen also to all. I hope my screen is visible to all, right? Yes. Yes, sir. Ayush, I'm just reading your message also that you are not present, so no issues. Ayush, just download all your MSCI blocks. There are 4 blocks, so just go and download the MSCI blocks from uh, your
your websites, igno's website, right? And there you, once you will download, just try to read, or probably you must have some hard copies also there with you or not this time. Do you have the hard copies or just a soft copy? Hard copy is also there. So for me, So probably if they provide you the hard copy also, you may check. Otherwise, the soft copy, immediately you can go and download those soft copies, and we can quickly start with that, right? So I think now you can see my screen. I have just opened a block 2, and in block 2 you can see we have major units, and the units related to what do you mean by the security threats and vulnerabilities, what do you mean by the concepts of malware, hacking issues and techniques, and security countermeasures. Fine, so we'll talk about all these points with practicals, so that at least you should be aware of what exactly the things are all about. Okay, so what is the concepts of security threats and vulnerabilities? If we'll talk about, do you know vulnerabilities means what? It means it's a potential weakness, some area where it is easily can be exploitable. Any area which is exploitable means, as you know, like a very simple example, if we'll talk about, in case of your networks, can I identify where is your routers, right? Or where you deployed those routers. So in case if I'll able to identify the power plug, and if I'll simply switch off your power plug, your entire network would be down. So these are the potential weak points. Your network security, I'm not even hacking any technical part, or I'm not getting into protocols, or I'm not getting into which type of topology or other things. I just want to talk about, like, even there is a process of physical security issues could be raised, and that could be one of the vulnerability from where the problem came across. Even though your bandwidth, your internet service providers gives you some fiber cables or some other channels by which you are receiving their internet services, and that's quite easy to even apply any physical attack. And that's what, like, the people are doing it. So probably in your area, if you have two or more service provider, so one of the service provider must be going to cut the wires of other service providers, so that they can face the challenge. All their existing customer would face challenges, and other would provide you the internet services there and then. So it happens a lot. It happens a lot, right? So there you have to identify that what is the best practice to transfer your data, what is the channels, what are the endpoints, what are the devices you are using. And then further we'll talk about the level of securities using protocols, security layers, and many different ways to procure your entire environment, right? So we should work on these grounds, and obviously malware is one of that. We'll talk about, let's say there is a concepts of like DOS and DDoS attack. This is the most important type of attack, especially in the terms of networks. So I believe there they are talking more on networks, right? Network security, what are open and closed security models. So I'm going to show you these practical points. What are the common vulnerabilities, how you can identify the common vulnerabilities, or some structured threats, and based on that we'll talk about certain attacks. And within attacks you also have a concepts of virus, worms, and other malware. So we'll talk about it, right? So let us quickly start with this particular direction, and we'll try to complete this part. So whenever we talk about network, so please try and understand network is one of the major criteria, major area where we have to learn if you really want to get into cybersecurity model. Okay, so network means what? There are many things in networks. Itself is a very vast domain. You should be aware of some common things, at least within the network. At least you should try to learn their concepts of topologies, types of networks, how the protocol works. So you should be quite aware of what are the different types of protocols and what are the security layers.
within that protocols. So you should be aware of that. You should be aware of the configurations of IP addresses. You should be aware of the concepts of MAC address, physical addresses, so footprints, how we can gather the network footprints. So these are the areas where we have to explore, right? And practically, let us start quickly. Start, and I'll show you. That's what, like, right now, what I'm going to do. I'm just about to start one more virtual machines for you. This is one of the windows which you can see, and on the base machine you can figure out, like, I'm running a one operating system called Sedulity operating system, which is just like Linux. Okay, so I personally work on Linux, and this is one of the patented OS, and we filed this patent in the year of 2011, right? So this is one of the our operating system where we are working, where we deployed many security patches, and we talk about the core operating system security. So I think you also have a one topic of operating system, I think block 4. So don't worry, we'll talk about operating system security in depth. Okay. So first you need to understand networks and network related issues and technical part. So quickly, let us get into it. You know, right now I have now two different operating system. One is Linux and one is Windows. So I'll show you. I'm going to open a one terminal. In this terminal, you can see I am supposed to start with the certain commands. So I will show you both the commands. Linux based commands, you can follow Ubuntu. If you are on Linux, I prefer you can go with Ubuntu, and these commands are again applicable on Ubuntu, so you must try that. Okay, so quickly, there is a command called sudo ifconfig. Okay, so what is ifconfig? Ifconfig is a command where I can see that presently I connected with the Wi-Fi, and this is my Wi-Fi identification card number, and there you can see this is the right now there is a IP address which is IPv4, as well as at the same time I have IPv6. So today we people are connected with a hybrid mode. Either we can use IPv4 or IPv6, right? This is the way how we people are working these days. So you know what is IPv4, IPv6? Can anyone explain what is IPv4, IPv6 quickly? Quickly, anyone can explain? Yes. What do you mean by IPv4, IPv6? We can say the format of IP addressing in V4 we have a less IP addresses, and Huh. IP6 we have a different format and having greater number of IP addresses available. Okay, good. What is the It's size a of logical IPv4 and IPv6? IP. IPv6 is 48-bit hexadecimal value. What about Rafi this? 48-bit is what? Is it IPv4, 48 IPv6? IPv6. No, galat hai Rafi. That's a wrong Okay. answer. Right. Please note down. Everybody, please note down. And take my words, this is very important questions, and similar questions are there always in your exams as well. Okay, so Ayush, yes, you are right. No, you are not right. In fact, your IPv4 answer is correct. That is 32 bits. 32 bits. So it's a 32 bits, right? So you can take a look. If I just wrote these values, it's like there. You can identify this is presently my IP address, my LAN IP address, network IP, local area LAN, or Ethernet, which is called as. So there are four numbers. Each number is called as basically an octet, which means 8 bits. And the number is divided into 4 octets. So 8 into 4, that is 32 bits. So total size is 32 bits for IPv4. This is IPv4. And because it is 8 bits, so the value at this stage on every octet lies between 0 to 255. Okay, what is it?
it always lies between 0 to 255. So it means you cannot write 256 at any stage or above. You cannot write 256 or above in any stage. Obviously it is exhausted, but exhausting of IPv4 is a different matter, that is related to your public IP addresses, right? This is private IP. And take my words, everybody is quite comfortable in their private IP, because this IP can never create any conflict with the other networks. So whenever you're talking about IP addresses, note down one IP address, especially like IPv4 as we are talking about. So your IPv4 is always divided into two major categories. First is network ID and second is host ID. So that depends that which network you belongs to and what is the unique number. So network ID, always remember, network ID must be common to all the computers within the same network. Network ID must be common to all the computers within the same network. And host ID, host ID must be unique to each computer within the same network, right? That is why every digital gadget have their own significance within the same network. And how many devices you have in the same network, that depends on the classes. So please note down, you have to learn the types of classes, that how IPv4 is being segregated in the classes. IPv4 classes are like class A, class B, class C, class D, class E. Although commercially we only use class A, B, C. Class D is for multicasting, and class E is reserved for future use. So these are the two categories where we can't use it commercially. So class D and E. Okay. Where if you talk about the top three classes, class A, B, C can be directly implemented in every network, Okay. So suppose you have a then the smallest class is obviously class C, and the largest higher class is class A. Why the IP address is being segregated into the classes? So there is a reason, that how many computers you want to engage in one particular network. So what are the participation, how many computers, how many digital gadgets are there within the same network? If the number of the computers are less than 254 or equals to 254, perfectly fine, you must use a class C network. But if it is more than that, then the another range is, then starting from obviously from 0 till, if you want the number of computers to be a part of one network, then up to 65,536 computers is to be the part of your class B network. And even more than that, then it is in class A network. That is nothing but the concept of 256 multiplied by 256. So total 256 minus 2 is the formula for class C. 256 multiplied by 256 minus 2 is the formula for class B. 256 cube minus 2 is the formula for class A. So these are the exact numbers. You can identify the exact numbers once you solve this small mathematical part, to identify that how many computers can be a part of a one network, which type of network. And that is why it depends. Like if you really see the IP address, if I'll see the IP like this is 192, it clearly states that this is IPv6, IPv4, but under class C. This is IPv4 under class C network. Why it is class C? Because the first octet, the value of first octet, how you will identify which IP belongs to which class. So the first octet, if the first octet starting from 0 to 127, 0 to 127, you just need to figure out the first octet. If the value lies between 0 to 127, then the IP is always and always class A IP. That means in that particular network, the first octet act as a network ID and rest 3 octet act as a host ID. That means 256
cube minus 2 is the formula applied, and that is the number of computers which can be deployed in class A network. Okay, so this is the way how you can test. This is the default values how you can test. So first octet value, if it is lies between 0 to 127, it is always class A network. If the value starts from 128 to 191, 192, your 128 to 191, 128 to 191, then it is class B. Then it is class B. And if the value starts from 192 till 223, so if the first octet value lies between 192 to 223, right, that will give you an indication. That means that IP address belongs to class C network, and in class C network, your total number of computers cannot exceed more than 254. So that is the depth of this IP, where if you will just go and read the IP address, check the IP address, you'll able to understand how many devices are there within that same network. What is the range of that network? Okay, this is how we supposed to identify, and we check many things, many things behind that. It is also based on, this is your class C network, which is called as subnet masking or net masking or subnet masking. I'll check and I'll show you Windows also. Like right now I'm in Windows, so I just about to click and start. And within Windows also, you are supposed to just start with the CMD. Okay, so you have CMD, you know CMD how you start. And within that CMD, try to type the command. The command is ipconfig. What is the command? ipconfig. Please use the command called ipconfig. Is that clear? Yes, sir. Perfect. So in Windows, if you want to check, then you can do a practicals along with me. I appreciate if you can do some practicals along with me, would be really better for all. Windows is still loading, I believe. So I hope this concept is clear to all. What is IPv4 and how to test what is IPv4? Even how you can define the IPv4? Yes, sir. Yes. Perfect. Perfect. There is a one more value generally we used to pass, that is called gateway value. What is gateway? Anybody heard about gateway? Gateway, sir, for the L3 communication, when it need to go out to the network, it should reach to gateway first. Great. So that means, let's say, if I want to access any website like google.com or any other, so if I want to generate the traffic for any computer which is
out of the network or on internet. So from my machine, if I'll generate any request, obviously that request must be reached to the router. That should not go to any other computer, right? So in that case, what is the best practice? The best practice is, right? So what is the best practice? The best practice is we should see, just give me a minute. Now you can see there we have a IP address. So IP config. So at this stage, I got another IP called 192.168.1.7, right? And now you can see there is again IP address of gateway. Now what is gateway? Gateway IP means that is the IP address generally of your routers from where your internet is connected. So obviously we have to define the path that my machine will generate the data packet, and that packet, if it's an any internet request, so that packet must goes to the default gateway, that is your router's IP, generally your router's IP. Okay, or we can in corporate or in any enterprises, we used to deploy sometimes proxy servers or WAF. So then all the computers need to transfer their data packet to the WAF servers, and from WAF servers or proxy servers will transfer that data to the routers. So in that case, we can generate some man in the middle kind of within the network to control the traffic, to manage the traffic, and to make some restrictions that you are not supposed to access certain websites which are not allowed within the organization. So that we can manage by using proxy servers or generally proxy servers, or we can also say sometimes these days we used to call it WAF, that is web access firewalls, right? It's a concept called web access firewalls, right? Is that clear? Any doubt? Yes. Okay, just give me a minute, just give me a minute. Okay, so I hope now the concept is clear, like what is IPv4 and how we can identify what is the purpose of gateway. And within gateway, even if you want to identify more details about your interface card, your LAN card, then the command is ipconfig/all. Then use this command called ipconfig/all. This will give you the name of your computer, whatever your computer name is there. So you will find your computer name, in which network you are the part of, this particular part, what is the LAN card which you are using. The most important part, physical address. This is your MAC address. Always remember, this is your MAC address. So MAC address is what? It is 48 bits. Somebody was saying now 48 bits for IPv6. No, the 48 bit is basically is for your
physical address, which is your MAC address, and that is also hexadecimal. This data is hexadecimal value, and this is the value which is the unique value for your Ethernet card. Okay, so the concern is, in case if I want to investigate any case and I want to identify from which digital device the activity being performed, so probably your IP may vary because you are using one of the protocol called DHCP server, and this protocol provides you a dynamic IP address every time. It's a random IP, dynamic IP. So suppose if I'll just shut down a router and restart my router, quite possible that I will get some another IP address. So that IP may vary if you are accessing from DHCP servers, but your MAC address remains the same. So we want the logs, and these logs for DHCP server. DHCP server logs are also within your router. Okay, so, or in organization they maintain those logs separately as well. So it is always a good practice to keep the DHCP log. What is DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol. This is the one of the protocol where you need a client server architecture of DHCP. In your router, we have a one application called DHCP server. Even in your mobile also you have DHCP server whenever you start your hotspots. Okay, in mobile. So anytime any Wi-Fi interface which start transmitting the data packet, so generally many other servers or protocols being started on the backend. So one of the server, that is DHCP server, which provides the IP address randomly to your all the DHCP clients. Because in case of Wi-Fi, you never deploy any IP address. You only pass the select your SSID, and once you select your SSID, you pass your passwords, and just you pass your passwords and you are connected to internet. But always remember, just passing the password won't help you unless and until you never become the member of that network, and for that you need a IP address. So if you really want an IP address, then it is highly recommended that you should identify whether you have defined the static IP or a dynamic IP. Static means you can go to your network settings, and even you can define your network settings manually as well. Okay, so that could be a static settings. But there you can see, if you are into the DHCP, that means dynamically your machine get an IP address, and in this IP address that may vary, but this IP allotted to which MAC address, which physical address. MAC address or physical address is one of the same thing. So the size of the MAC address or physical address is 48 bits. The size of IPv4 is always 32 bits. In IPv4 it is written in the decimal values, and in MAC address it is written in the hexadecimal values. I hope this concept is clear to all, right? So in investigation, if he goes to any network and if he'll try to identify from which machine the attack being committed, so in that case we'll try to identify their IP address and that IP being issued to which MAC address, and accordingly we identify and will reach to that device that so and so attack being committed by this MAC address. That means that particular machine. So this is one of the unique address called MAC address. There you have a unique address, and in your network interface card, that could be your LAN card or Wi-Fi card or any network interface card, right? So every network interface card could be in your mobile or in your laptop, computers, routers, or even managed switches. They have their network interface card, and there they have their MAC addresses. Got it? And further, yeah. So there you will find this is your IP, and which belongs to which particular class, that also being mentioned by your subnet addresses. And even you can see the lease obtained. What is lease obtained? Lease obtained, that means the lease being obtained
by the DHCP server. By the DHCP server, the lease obtained on 17th May, and it is valid, let's say, for 24 hours. So till 24 hours, the another next 24 hours, my machine, my MAC address will always get this IP if my router is on. And now if I want to continuously work for more than 24 hours, and if that time expires, if it reached to this lease expiry date time, continuously if I am working, then this lease will automatically upgrade to the next 24 hours. That is the policy written in the DHCP servers. All right. And obviously, whenever you're going to access your internet, so where is your DHCP server? Where is your gateway? So you can identify the details that your gateway IP is 192.168.1.1, and at the same time, my DHCP server IP is also 192.168.1.1. So you can identify these things, and on that basis, the things process. Even you have a DNS server settings and everything being mentioned over there. So this is the way how it is being written. All right. Is that clear? Now the question is, what about IPv6? As I ask you about IPv6. So IPv6 always have eight blocks. I will not say octet. There are 8 blocks where each block is of 16 bits. So 16 multiplied by 8, that is 128. So the total exact size for IPv6 is 128 bits. So there are 8 blocks, but you will see, can you say, sir, ye raha ek block? This is one first block. In center, you might take it as a second block. So all the values being separated by colon. This is your third block, this is your fourth block, this is your fifth block, then you have sixth block. But I said there are 8 blocks. It's not 6 block or 2 blocks, or what about this 1, then you say 2, then 3, 4, 5 and 6 or 1. No, it's not like that. Please remember, whenever you have colon, so colon means total there are 8 blocks, but in between these blocks carry their value 0, 0, 0, 0, colon 0, 0, 0, 0. So that means if it is 0, 0, 0, 0, if their value is that, in that case you are not supposed to write anything, just write colon. It is self-explanatory that you are not supposed to write everything in detail, even if they don't carry their values. So basically there are 8 blocks. Understood? So there are 8 blocks. Each block is of 16 bits, and total size of IPv6 is 128 bits. These days, if you are connected with mobile internet connections, so your mobile service providers always provide you IPv6 and their mobile apps, and every certain connectivity is based on IPv6. But if you connect it to your regular internet in your laptops and all, or you are accessing certain websites, in that case, mostly still in the globe, in the entire world, right, people are still using IPv4. So that is why we are in the stage of hybrid mode, because we are working on mobile computing as well as on a regular traditional computing on computers or accessing websites and all. So remember, we are working on the hybrid technology. That is, anytime if it is required to go with IPv4, my machine is already on IPv4, so we can create a communication on IPv4. And in case if any web server or any mobile application servers required IPv6, so we also have IPv6, and my machine can able to connect to IPv6. Is that clear? This is the way how you can able to access and identify the details about your computer. The command is ipconfig/all in case of Windows. If you are a Linux users, then you can try ifconfig. So in Linux, we'll try generally ifconfig. There we have the command. Yeah, this is what, like, try to use with sudo. Sudo means run as administrator. Like in Windows, you have the option right click, run as administrator.
So in Linux, we just used to write a sudo. That means super user do this command for me. So I'll get administrative privileges to access the data from the kernel of the operating system. So for that, I try to access, and some details are there in front of us. So presently I connected with the one of this Wi-Fi address, and there we have a IP for IPv4 as well as I have for IPv6. Is that clear to all? Yes, sir. So basically, the IP4 versus the IP6. Uh, the main difference is the IP6 has the 128 bit of values and IP4 has the 32 bit of value. But Right. That is the size. First, size, the concept of size. Right. Right. Is that clear? yep. Second, the format. The format is in IPv4 we used to write in the decimal values. In IPv6 we have to write in hexadecimal values. There we have a 4 octet. In IPv6 we have 8 blocks, each block of 16 bits. So the format, right? Second, size. So these are the two basic feature difference, very basic level features, right? Second, because again we have a great range in IPv6, so that is why it is quite possible to deploy a unique IPs for public IP addresses. Now you need to understand the two different types of networks. The IP which you are talking right now is your LAN, is your local area network. But what about the IP addresses for the all ISPs, internet service providers, for the public IP addresses? This is private network. I'm now talking about public network. So always remember, whenever you are on the internet, you can check what is your IP address, public IP and static IP. So I have shown you the private IP. Now to check your public IP, just go and type what is my IP. So if you'll go and just write on Google, hey Google, can you check what is my IP address known to you? Right. If you'll go and write like this, so it displays you right now, I'm carrying this IP address. So in this way, you will find your public IP address. So now it is starting, let's say, by 110. And as you have seen, my IP started with 192. That means what? That means whenever you are on internet, you have two different types of IP addresses. One is your public IP, the public IP address given to you, allotted to you from ISPs, internet service providers, right? And the private IP is being allotted by your local admin or by your hardwares, being configured accordingly, or pre-deployed or pre-configured accordingly, so that any user can simply buy any hardware product like Wi-Fi routers, connect with your WAN port and local LAN port, and simply you pass your username, password, and you can access. So you need not to be bothered about what is IP. So for that, DHCP will take care of it. So all such configurations are there generally in your routers, so that you can able to access what exactly the way it is going on. Understood? So you have two different types of IP. Please, you can also go and check what is your public IP address and what is your private IP address. Hardly matters you are on whatever network presently you're connected to. So you can test like this. Is that clear? Just try what is my IP. So just on Google, just go and type what is my IP. You will find your public IP over there. Or this is a very good website. You can try to access even this website. What is my IP address, or what is my IP.com? There are multiple websites which can also try and access. So what does it mean? It means I generated a request to the Google and I asked Google, hey Google, according to you, what is my IP address right now? So it means any activity performed by me on the internet. The most fascinating aspect. Okay, so it's so whatever the network
where I was supposed to connect. So there are two different types of networks. One is public IP and private IP. All right. So I asked to Google, hey, tell me what is my public IP address and any activity performed by me on internet, not only Google, every third party website. My footprints are always there with my public IP address. So my footprints are always there with my public IP address. If I'll send you the mail, if I'll send you WhatsApp, if I'll send you Facebook, or any damn thing, anything, right? Any activity, or even I'll just go and click like. So the moment if I'll click on like, you can't imagine, like we'll able to trace your details, your footprints, and based on your footprints, even we can able to extract your geolocation. Right. So if you are doing any activity online, it is quite easy to identify your various different types of details and being captured by any anonymous people or any third party apps which you have already deployed in your mobiles or even in your laptops. So these all sites, all, even operating system like Microsoft, even your any third party application like Adobe or zip file or any other whatever the application you deployed on the back end, these days they try to create a tunnel, try to capture your information and process that information and update their servers, because today everybody is greedy about data. Every organization want to hack your data and they want to do a behavior analysis on that. So now every organization is on the collection of data. So once they'll collect the data, they can further take that data to various analytical algorithms. So based on analytical algorithm, they can check your sentiment analysis, prediction analysis, behavior analysis, and many more things. So they can easily trace your activities. They can identify what even you are supposed to do in the next hour. So they can able to predict. Let's suppose if you simply go and book your flight ticket from your location for any particular date, that means there must be a lead for Uber or other cab providers to drop you from your home to your airport. So on that day, so they will just generate that lead, they'll capture your behavior and share that behavior to all these Ola or Uber providers, where they start sharing some service coupons to you that hey, you should go and book Ola or Uber, and you will get some extra benefit for that date. And you will say, अरे मुझे तो वहाँ जाना ही था, and I got a offer also on that drive. Right. So this is not coincident. It is 100%, hacked information, your privacy being compromised, and that is the major threat for global economy. And even these third party organizations who are going to pour into the marketings, how they'll market, they basically try to generate data packets in such a way, they'll try to identify your behavior, and based on your behavior, for obviously they accept a one means they'll ask you to sign a disclaimer, and we people just simply click on I agree button without reading their disclaimers, and afterwards they actually hack our data. So I always say, even stop using Google. Even I'll say stop using any third party apps like Ola, Uber, Swiggy, Zomato, or why not your any like Truecaller, or these all apps, or even Snapchat or social media app like Facebook, Insta. Every particular app is there to trap your details. And how they trap your public IP address. First of all, that is our primary parameter, public IP address. After public IP address, we need from which operating system, from which device, from which browser, from which app, what is their version, and
which ISPs you are using, from which country, your geolocation. So these all are the multiple parameters by which they used to capture your data, and based on that data they try to analyze your behavior, and based on your behavior then they try to identify the business leads. So this becomes a model of business analytics in these days. Everybody is more eager about business analytics, right? They are going to generate such packets as such applications so that they will get more revenue on it. Understood? So this is how the people smartly performing. It is not a difficult task. Today we are in the AI model. So today think about cyber security with AI, and why not hacking with AI? So we are more in the, I would say, threatening prone devices which we are using, or the networks which we are using, because there are a lot of vulnerabilities exist, and any third party app can penetrate, extract, and collect the information as and when or whatever they required. Understood? This is the way how they used to trace our details. Public IP मिल गया सबको? I hope you all have checked that. Yes, so just one question. So Yes, जो please. public address, जो public IP address है, is this a dynamic address or it's a static one that whenever I go and browse it, maybe today or tomorrow, it will remains the same or it will change? Or Generally, it will change. It is dynamic because your ISP also have the limits. And if you frequently switch off your routers and switch on your routers, your Wi-Fi routers, whenever you switched off and you switch on, mostly you will get that dynamic IP, so random IP, another IP. But don't worry, all the ISP maintain the logs. It is mandatory according to the new regulation for intermediaries proposed in the year of 2021. All the intermediaries, it is mandatory for them to maintain the logs, that which IP on which date is to be provided to whom. So their KYC, your KYC details are always and always with the ISPs. And as and when the investigation goes across, we can immediately get your details, that even for 30 seconds, if you get that particular IP, so you switch on your internet, you just already have some mails in your outbox, and you simply open your outbox, mail synchronized, all mails gone and received and all synchronized, and simply you switched off the internet. So even if you access your internet for 30 seconds, there must be a log at what time you started and at what time you ended with that IP. So that means we have to be very, very careful for timestamps, and timestamps investigation along with their geolocation. So plus 530 is the Indian GMT, IST, Indian yes, Standard yeah, yeah, Time. So yes, whenever we are supposed to check if the IP address being transferred or being accessed, let's say with the US servers or other servers, so we need to cross check the time zones. And according to the time zone, first of all, we'll convert that time zone in Indian time zone, and after conversion then only we'll get the appropriate answers, and accordingly we'll try to investigate. So first time zone, second IP. Although many organizations, suppose that depends, even you can request to your ISPs that no, I don't want dynamic every time, I want a static IP. For that static IP. you have to pay extra to your ISP. Correct, correct, yes. Right, you have to pay extra to your ISP, and then only you will get that particular IP and dedicated IP to your network. Even it is highly recommended that you should use your IP only instead of dynamic, because sometimes the human errors are there on the back end by investigative agencies, or even why not the ISP employees. So sometimes we found discrepancies between the data being generated or shared by their organizations. So even in my office, and today I am at a home also, even at my home, I only take the internet connection once they provide the ISP, static IP. I always have static IPs, right? And it's been many years I'm using a specific static IPs.
So any activity performed by my static IP would always being I am responsible for that. It is very clear, very transparent. But I never get any dynamic IP, right? So, but actually at your home or in your offices, if you bought a simple internet connection, then it is always and always dynamic. Okay, Okay, sir. dynamic to you, but it is obviously static list. They have the pool of IP addresses issued to those ISPs, right? And out of that pool, they provide you one of the IP to your device or to your network. So all public IP addresses are there, and now depending upon the ISPs, how they are sharing their internet services or resources to you, so that you can also access internet, right? Yes. Perfect. So this way, now if you are onto it, I'll just give you the idea how we can check further details. So if you know the IP, now let's say I'll show you one more thing. Uh, Even we can able to trace some, let's say IGNO's website. Let's say we'll do some R&D with the IGNO website. Now IGNO website, so IGNOU. I'll just go and type IGNO's website. Let me see what is that. I try to identify, it's igno.ac.in. So let me try to identify on which static IP the site has been hosted. Obviously, all the website must be on the static IP. All the hosting must be on static IP. But uh, in your place, in your office, or at your home, they provide you dynamic public IP given to you by your ISPs. Right? Okay. But any website, so there are some hosting servers. So the people who have hosting servers, although it might be a sharing server, so multiple website hosted on particular IP, that is possible. But this is the way how we can try to trace that we have this website, and if any such website is there, can we able to trace where it is being located. So let us go and quickly check. I'll try to identify the IP, that is igno.ac.in. So I'll simply go and ping, even not required, I will simply go and ping to igno.ac.in and just press enter. Once you press enter, you can see we found a particular public IP address where the igno.ac.in has been hosted. So now I'll just copy this public IP address. So if I get that public IP, I can investigate the footprints of any IP. I don't know where the site is. I don't know why it is even not opening. Hardly matters. But still, there is a concept. Now I'll go for more extraction of the detail called whois records. So I'll go with whois dot domaintools.com .com, and further I just go and paste the IP address of IGNO's website. So I want to check where this website has been hosted. I want to check what is the detail about this website. Do you know where it is hosted? Can we able to analyze? Can we able to identify? For that, we need to figure out the details, the footprints. The target evaluation is very important in networks, and it is all along with their IPs and all. So sometimes we need to find out the activities, the behavior of any website from the backend. So there is a one of the service called whois. What is it called? Whois. Now, what is whois service? This service is being provided by one of the organization called ICANN. That is Internet Corporation Assigned for Names and Numbers. ICANN. What does it mean? Internet Corporation Assigned for Names and Numbers. So what names? Names are all domain names, and numbers are all IP addresses. So in the word, entire word, which IP belongs to which domain name belongs to which IP belongs to which ISP, all their records are there. So you can see IGNO's website, this IP belongs to IGNO's website. It is issued to IGNO. It is a static IP being provided to IGNO.
And how many IP addresses? They have almost 254 IP addresses with them. Even more, yes, 254. You can see the total 254 IP addresses allotted to IGNO on the back end, and all the details. And in case if you found any discrepancies with this website, see, there is a problem right now, you cannot access. I don't know at your end, but on this network this site is not opening, but hardly matters. I try to identify with their IP address. So I try to ping to IGNO and it gives me their IP. So this is DNS entry. I try to recall the data from their DNS entries. And on that basis, I try to identify their IP, and that clearly said that this IP belongs to IGNO. Even if you want to report, I identified their email addresses, their exact address, even their phone numbers. See, this is the phone number from the backend, which is dedicated to Deputy Director of IGNO, and along with their email ID. In case if I face any inconvenience related to these IP addresses, even there is a concerned person name also there, the person who is behind the IP configurations for IGNO, who might be taking care of IT and could be a deputy director. The name of this person is K. Govatham. Okay. So there we found their IP, their mobile number, their email ID, everything is there. This is how we can trace their detail. Even the site is not opening, and I identify to whom I have to contact in case of any issue being raised for this website. Are you getting my point? So this is a good case study. I think right now you can able to see that even I'm not able to see the website, but I try to identify their backdoors, their footprints from the different aspects, and from that I try to extract their information and able to identify the name, number, details of their concerned person. Is that clear? Any doubt? Yes, sir. Great. So this way we try to identify the footprints of these people. Next, let us try to identify more vulnerabilities. Now, as I got a IP address, as I identified the IP, I need to figure out, let's say we want a target to hack this site. Obviously, please never go, and I never suggest to anyone to go and get into these mess. Okay, we are here to give you the way that how to secure, not to hack or to disturb others. Okay, so please take precautions before you apply any certain attacks or so. The next and most important part is your port scanning. Now, what are ports? Try and understand the ports, because we have to identify the vulnerabilities. What all the vulnerabilities you will able to identify, and what are their threats, how you can identify the weaknesses or vulnerabilities in your network. So for that, the next step is, I think now you are clear with how to get the IP of any domain, or how to investigate their footprints. Okay, now the next step is we need to figure out how many ports are there. So let's say I have my IP address, this is my private IP. I need to cross check how many services are running on the back doors. So you need to understand what do you mean by the ports. So always remember, in your digital gadgets, if you receive any data or transfer any data, that data is always going through some ports. There are total 65,536 ports are there. How many ports? 65,536, starting from zero, because zero in computer science is, it consumes memory. It carries some existence. So zero is also existed value. So we have to count to zero, from zero till 65535, 65,535. So total number of ports are 65,536 ports are there, from where my machine used to receive or transfer the data packets. Now, if I want to cross check that my data is being received or being transmitted in my machine,
How can I figure it out? How can I check? So for that testing, the best practice is simply try this command. Even in Windows you want to try, you can try this command in Windows. The command is netstat -an. Netstat -n or even an, you can try, right? So in this case you can identify, even you can see in Windows I have not started any browser. Just I start the Windows, and in Windows I started directly CMD. And once I start CMD, what I identified, that there is a TCP connection being established. So this is one of the Brahmastra we use in investigations and identifying the vulnerabilities. अभी मैंने Windows on किया, I just started Windows, and even I have not started any internet services. I have not opened any browser. Just start a computer where it is connected to internet, and simply I open the CMD command prompt, and where if I'll go and type this command, I identified that there are many different connections being established. What does it mean? It means that, let's say if I'll try to analyze, let's say this is my IP, which is my local address. So my local IP address is 192.168.1.7 colon with the port number 139. Same way, colon with the port number 49,717 and many other ports. So my machine, this is my local IP connected with the foreign port, the internal ports. These all are random ports. There are initial 1024 ports which are called as well-known ports, and rest all the ports known as random ports. So my machine transferring the connection started transferring the data from the port number. After colon we have a port number 49717 to one of the IP address, that is 4.213. something something something, to the port number 443, where 443 port number is HTTPS. So if you are going to access any website, that is always HTTPS protocol works on port number 443. So that means my website, my computer is connected with random website, even I have not started browser. So that means there must be some backdoor running in my system. It is a vulnerable system, or some backdoor services who try to send a data packet to any remote server. Now it is a case of investigation. Okay, why my machine is connected to many third-party IP addresses without my permission, even though I have not started any internet application. So that is what, like, even the connection is established. Now it's a case of investigation. Can you investigate now for me? This is the IP address. So let me quickly copy the IP. Can we copy this IP? Fine, I got an IP, and now I'm going back to the another operating system, and in this operating system let me come back. Okay, and let me change the IP. What is this IP? Why my machine is connected to this random public IP? So if I just go and check who is .domaintools.com/that IP address, see, oh my god, my data is more going to India Pune Microsoft operations cooperation. That means, array, you are using Windows, and Windows is also hacking your machine. This is Microsoft. I have not started anything, but Microsoft operating system, Windows 10, Windows 11, also hacks your computer. See the impact. My system's data being transferred to one of the server deployed in Pune in Microsoft. So what Microsoft is doing, because I'm using Microsoft Windows, so they try to hack my details. They identify what all activities I'm using, whether my Windows is pirated or not, or anything. There must be a person called Somesh. आप जानते हो किसी सोमेश को in Microsoft? See, it is there. And along with that, their US mobile number is also there. Their email ID is there.
right? So in case now I have to report why Microsoft is being connected every time whenever I'll start. So to whom should I connect in Microsoft? Do you know this? Is it written somewhere in Microsoft site? No. Why don't I found many multiple websites and email IDs. I should ask them, why, Mr. Somesh, tell me the answer. Why the moment I start my computer, why Microsoft started a backdoor connection in my operating system, and what data they are extracting, although I have a licensed Windows. So this is bad, means, this is see, many people are there behind, Don Prachi Singh in Microsoft, who are doing, and they are the people behind this, who are doing certain activities, and all the data is going to Microsoft in Pune. So we're sitting here, and this is my machine. Why my machine being connected to 4? So just check, in your machine also you are connected with any IP address starting from 4 dot something. So this IP means it belongs to Microsoft, and they are hacking your data. They are extracting the data from your operating system, and they are identifying, are you using a legitimate, are you a user as an legitimate user or a fake user, or is it your operating system being pirated, counterfeit, or the genuine one? Or, means, if they are doing this, okay, that is their job. But what happened, I don't know, because connection is established, it's a TCP connection, three-way handshake. Are they really accessing my data also, from my C drive, D drive, or my personal data without my permission? Did I really pay to Microsoft for this task, that they can come and anytime generate any backdoor and access my data? That is the reason I don't prefer Microsoft. This is the way how I investigate. I don't prefer Microsoft because they have some hidden backdoors running on the back end, and I don't know what they are doing. I have not started anything. Nothing. It's just a very simple operating system. I just started CMD, and what I identified, even I need to investigate about multiple other IP addresses. So probably there could be a one antivirus in your system, and they are also doing the same job. Because once internet is on, your antivirus is on, probably they try to connect you. So that could be a legitimate connection. I'm not saying it's not a legitimate, or it's not fruitful or useful or what, but these all are the backdoors. I identified 5 backdoors in Windows VM virtual machines. This is what in Windows I identified, in my machine I identified right now, and I would like to take some action on this. I have to immediately, either if I'll not take any action, then how to procure, what are the do's and don'ts? Go to Windows firewall, block their IP address. I don't want that they will access from any 4.0.0.0. Any IP is there, I don't want. Or you can even block these IPs in your routers, that at least Microsoft should not enter on the backend in my network without my permission. And I don't know who are these others, which is a part of investigation. Port 80. Port 80 means HTTP. It's a regular website. Port 43 is HTTPS. So for more details, you need to learn. And that could be one of the question in your exam. Which port number belongs to which protocol or service? So you need to learn all these things. Understood how to identify the backdoors, the loopholes in the network, and please try at your end. Why don't you try and practice this and check? Are you also connected on the back end? Even you are on Android, Mac OS, Linux, Windows, the command is same. The command is netstart. Yeah, even I have 4.213.25. तो 4 वाला है ना आपका भी Yeah, IP. So just think like this is what don't you think so? This is a malfunction. Why Microsoft without my permission is accessing my internet services? And even if they are accessing, it means the backdoors are there. They are utilizing my network without my permission. And I don't know what the data they are accessing.
how much data they are extracting, what type of data is there. Could be I have some confidential data and they might be using on the back end. I trusted on Microsoft and it is an operating system, and still they are hacking, they are extracting. So could be anything on the back end. Anji Manjeet, you have a query? Yes, please. So how we can trace which application is mapped to that IP and getting communicated on Yes, the we operating can system? further go for it. Why not? For that, you need to check the process list. You need to check the backdoor services. You need to check Mhm, the list of process. Go and open your task manager. Identify mhm. the services. Identify Microsoft services which are running and using your network services. So there are various ways, various different methods by which we can trace that what all the activities being performed on the backend, which application is running. So there must be, if everything is running, you can go and trace the, just go and right click on the taskbar, go and check your task manager and check the backdoor services or any application which is ongoing, and you can able to trace their activities there and then. See, even I have not opened any application, so you can see it's very rare, but all these are now, it means it's a backdoors. So I need to figure out more in detail. So better you open it in more in detail and check the process list. Even my CPU is 100% utilized, my memory, disk, network. You can try and test all these things. Are you getting my point? And any app history. So what all the things are going on and why it is going on. You can see like Adobe is also accessing some data, why it is 100% utilized, where it is utilized, which application, which process is consuming my processor details. I need to figure out. Total 132 process running on the back end with 996 threads and see 43,000 handlers at this speed. And it might differ in your machines because you have a base machine. In your base you have a Windows. This is my virtual machine. Still many things are going on, right? How, why is so much memory being consumed and by whom? So that might be some malware behind this VM. Actually this VM is my VM is actually, you can see, I'll just show you. I kept this VM for malware analysis. So this is my virtual machine, you can take a look. This is actually my virtual machine VM, where I meant this VM for malware analysis. I introduce malwares in this virtual machine so that I can able to identify their behavior, to trace their behaviors. So we are into like untraced malware detection. One of my scholars PhD being awarded, and she become a doctor now, long back in fact. And we work on polymorphic shellcode detection technique, and we use a model of ML and AI with blockchain to identify the untraced malwares जो आज तक ट्रेस भी नहीं हुए हैं, उनका भी बिहेवियर आपको एनालाइज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा पीएचडी करवा दी मैंने तो। इट इज अंडर माय सुपरविजन। सो यू कैन गो टू वन ऑफ द गवर्नमेंट वेबसाइट, हमारी पीएचडी की पूरा डिसर्टेशन, पूरा थीसिस ऑनलाइन पड़ा है। आई विल शेयर सम लिंक इन केस इफ यू वांट। सो वी आर इनटू कोर इनटू मैलवेयर एनालिसिस। तो मैं मैलवेयर अपने बेस मशीन में डालता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माय बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज Fidelity ऑपरेटिंग सिस्टम, and I'm using one of the VM virtual machine of Windows, and in this Windows I actually used to deploy some malwares. तो मुझे यही चेक करना होता है कि ये क्या बिहेवियर है। दिस इज आवर जॉब, राइट? हियर वी यूज्ड टू वर्क अ लॉट। इसमें आपको पता चल रहा है टास्क मैनेजर खुला और एक ये रन टाइम डॉट नेट रन टाइम एक्टिविटी कर रहा है कुछ। देखो कितनी मेमोरी ले रहा है ना? वाई सो मच यूटिलाइजेशन? आई डोंट वांट इट। So can we map this applications to any IP? Like I want to trace this हाँ पूरी application तरीके से। using which public IP to get communicated. हाँ, 100% we can able to trace. There is a Okay. procedure to identify every single thing. Only the part is, first you need to open and explore the details. Okay. Second, there is a concept. The concept called RAM dumps. Basically, what we do in case of forensics, we try to trace their RAM dump. आपका RAM कितना है?
will try to extract every single bit from the RAM. और RAM में हमें आपका कौन सा प्रोसेस आईडी, कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कौन सी बैकडोर में कितने थ्रेड्स ओपन करे हैं, उसका कोई पेरेंट थ्रेड, उसके चाइल्ड थ्रेड्स, सारी डिटेल्स बड़ी बड़ी डिटेल में मिल जाती हैं. But for that, it's a different architecture. You cannot go with the basic testing. But we have a different architecture. But as a layman, at least you should start working on the ground where you can identify maximum utilization being done by देखो runtime broker. आप देख रहे हो. अभी एक बात बताओ, एज, अरे एज क्यों चल रहा है, क्यों मेमोरी ले रहा है, मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट एज खोला भी नहीं है. Why Microsoft Edge? Or probably this is also being connecting to Microsoft website. So can't we try and ntask it? अगर मैं ये ntask करता हूँ और उसके बाद net start command चलाता हूँ तो चेक करो बंद होता है क्या. That is also one of the way to test. अभी मैंने Edge को ही बंद कर दिया. I don't want Edge. Why installer? What is installer? अरे क्या Edge installed नहीं है क्या? Edge तो जब Windows डालते हो तभी install हो जाता है. What is the Edge installer? So I have a doubt on it, and I don't want this any installer. Why Edge update? And this is very clear now why it is updating. I don't want any updates. So Microsoft on the back end trying to do updates. Why Skype? Skype has already been deprecated by Microsoft. Why Skype? I don't want Skype. I never installed any Skype, but still there is some backdoors. So you can see these kind of things. Such certain application, try to terminate these application and quickly at the same time again go back, because NetStart will give you the real-time status. The NetStart will give you the real-time status presently that my machine is connected. Still you can see now only 2 connections left. So I try to mitigate with my risk and still 2 connection left. इसका मतलब अभी भी Microsoft कोई backend में है. पहले 5 थे. If you have seen in my machine, I stopped certain services, and after stopping those services, I identified that rest all the services being terminated, but now only still that 4.1 is running. So again, I need to go and cross check why it is running. Even though the best part is you can find the performances, you can check the app history, that in case if there's some data, anything which is in the startup. So this is again could be one of the reason आपको अपना startup check करना होता है. देखो startup में edge क्यों डला हुआ है. So it's highly recommended disable it. I don't want any update every time update on Microsoft Edge. हर बार हर रोज ऑन करेंगे, हर रोज startup में चलेगा क्या. So just disable it. Try to disable if you don't want. क्यों चाहिए, अरे भैया Adobe Reader, चलो ठीक है Adobe Reader ओपन हो रहा है, रोज Microsoft Adobe Reader अपडेट करना है क्या. Disable it. I already disabled. I don't want to update every time. Why Adobe Reader need to be updated? जब नया वर्जन आएगा तब I'll download. Why Adobe is doing certain activities on the back end? So it is your call. You have to see why this icon every time. You can see this icon comes every time. This icon every time comes in front of this your process, because it is being done by the Microsoft notification. If you don't want, just disable it. So many startup application, first you go to startup application and check, is there any Microsoft activity being going on the back end? If it is so, just disable it, or even if possible, you can remove it. Go to their properties, find, and you will get some services on the back end. If it is so, go and quickly disable it. Now you can able to find this application.exe, which is what is the name, where it is located, what is the path. So I think now you can see what exactly you are looking for. ये सारी information आपको basic level पे यहाँ पे भी मिल जाती है. But this is related to startup. What about backdoors? So कौन से यूजर से लॉगिन किया हुआ है, कितना यूटिलाइजेशन है, डिटेल्स क्या हैं, एंड ये रहा आपका प्रोसेस आईडी, यूजर आईडी, सीपीयू यूटिलाइजेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन वैलिडेट हुआ है या नहीं, ये सब रनिंग स्टेट में है. Are you getting my point? These all are in the running state. Why so? If it is not required, please cross check.
and in this way you will find the name, their process ID number, their memory management. ऐसे ही malware भी हम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं। malware जो बैकएंड में चल रहे हैं, अब ये देखो, एक बात बताओ, ये कौन है भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये सब कौन है, ये ऐसी एप्लीकेशंस क्यों चल रही हैं, कुछ डिसेबल्ड है, कुछ इनेबल्ड है ना? सो रियली इज इट रिक्वायर्ड, really is it worth every time to start with these different, why so many svc host, itne sare svc host hain? So these all are the backdoor running programs. Can you see how many svc hosts? So it means something wrong is going on in your system, and at that same time we identified their part, we identified the process id, their name, their application and on. So we can try to figure out, right click, you can end task, or you can set their priority, you can identify the path, properties, open file location, ye kahan se chal raha hai ye wala, you can go and click and open that folder, where this con host, who is this con host, where it is located. सी ये सिस्टम 32 में पड़ा है, कोई कॉन होस्ट, विंडोज में सिस्टम 32 में पड़ा है। सो यू कैन फाइंड देयर पाथ फ्रॉम विच एप्लीकेशन दैट एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्मिंग। ये रहा कॉन होस्ट, कब डाला था, इज इट द डेट एट द टाइम वंस आई इंस्टॉल्ड माय ऑपरेटिंग सिस्टम, it comes with the along with the operating system, or is it a third party one? Further you can investigate. Understood? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट तो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स भी इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, मैलवेयर एनालिसिस भी हम लोग यही करते हैं, उसके अंदर हम लोग यही मेजर पार्ट लेके चलते हैं। जो अननोन अनट्रेस्ड मैलवेयर्स हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करने के तरीके हैं ये सारे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बैकडोर्स होते हैं वो सर्विसेज के फॉर्म में होते हैं, एप्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल और विंडोज एप्स और विंडोज सर्विसेज? So first you need to learn, you need to understand what is the service and what is the application. Application always have some UI, उनका कुछ ना कुछ कोई UI होगा, यूजर इंटरफेस होगा। सर्विसेज का UI नहीं होता, सर्विसेज don't have UIs, right? And in case if you found any service which is running on the back end, say this is what Adobe service is running with their process ID, ये running में यहाँ पे भी मिल गया ना, right click, start stop service, let me stop the service. If I'll stop that service and manually if I want to make changes, so you can go and open that service and you can disable it permanently if it is not required. Understood? तो इसमें आपको कंट्रोल पैनल में सर्विसेज मिल जाएंगी, वहां से भी कर सकते हो या यहाँ से भी ऑप्शन है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट सर्विस, गो एंड ओपन द सर्विस सेटिंग्स, तो सर्विसेज ओपन हो जाएगा एंड देयर यू कैन गो एंड आइडेंटिफाई वेयर दैट सर्विस इज ऑल अबाउट, यू कैन ब्लॉक, यू कैन एक्सेस। तो इस तरह से हमें पता चलता है बैकडोर में चल क्या रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। Is that clear? ये देखिए ये खुल रहा है, ये आ गया जी सर्विसेज, और जो मैंने पर्टिकुलर सर्विस सेलेक्ट करी है ये पूरा सर्विसेज आ गया, राइट? सो आई डोंट वांट ये एडोब बार बार चेक करे कि भैया जेन्युइन है नहीं। अरे यार सिंपल फ्री देता है फिर भी जेन्युइन चेक क्यों कर रहा है एडोब? एडोब पीडीएफ रीडर इज ऑलवेज फ्री, देन व्हाई दे आर ऑलवेज चेकिंग जेन्युइन है या नहीं? आई डोंट वांट दिस सर्विस टू बी रनिंग। राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज एंड परमानेंटली ऑटोमेटिक है, स्टार्टिंग है, इसीलिए बार बार बैकडोर में रन हो रहा है, इंटरनेट आ रहा है। सिंपली गो एंड डिसेबल इट, और 100% फर्स्ट डिसेबल एंड फर्स्ट स्टॉप इट एंड मेक इट डिसेबल। आई डोंट वांट कि हर टाइम एवरी टाइम एडोब विल गो एंड चेक माय जेन्युइन सॉफ्टवेयर। अरे जेन्युइन फ्री है फिर भी जेन्युइन क्या करना चेक करके? व्हाई अननेसेसरी बैकडोर सर्विसेज आर रनिंग? जस्ट स्टॉप इट, अप्लाई इट। आई डोंट वांट इट, completely disabled। यहाँ चाहिए होगा तो बेटर है, यू कैन मेक इट मैनुअल,
I don't want automatic. मुझे चाहिए ही नहीं ना बार बार genuine check करे ये करे. So it's simply disabled. Okay. So that means I reduce one traffic. इससे आप अपना system optimize भी कर रहे हो. Your operating system get optimized, and at the same time you are mitigating from third party risk prone model. So how you can correlate with the network and with your applications, it is there in your task managers. Explore one by one, find the services. Better पता है क्या है? Better यह है कि जब आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मैलवेयर को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. हम लोग नया वीएम डालते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन्स. नए वर्चुअल मशीन का हम स्नैपशॉट ले लेते हैं. देयर आर मेनी थर्ड पार्टी स्नैपशॉट ऑप्शंस. इवन विंडोज में खुद में है, इनका सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना देते हैं. सो विल ट्राई टू क्रिएट अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, or there are many third party application which you can use to create their snapshots. And once you get that snapshot of the operating system, further we introduce the malware to that VM. तो हम खुद पेन ड्राइव लाते हैं इन्फेक्टेड वाली, या CDs या DVD या कहीं से वायरस सैंपल लाते हैं, और वो अपने सिस्टम में खुद रन करते हैं. तो वो जब सैंपल रन होगा, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो कहीं ना कहीं कोई रजिस्ट्रीज छेड़ेगा, कहीं लोकेशंस में कहीं फाइल ऐड करेगा, कोई बैकडोर प्रोसेस ऐड करेगा, सर्विसेज ऐड करेगा, है ना, ड्राइव्स को छेड़ेगा, फाइल्स को करप्ट करेगा, डिलीट करेगा, ऐड करेगा. whatever their activities are there on the disk and within the operating system, will try to identify. How will identify? क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले से ही स्नैपशॉट है. So second, after deployment of these malwares, will again take the snapshot. जब उसका इम्पैक्ट हमें दिखने लग जाता, अच्छा ये गड़बड़ शुरू हो गई, मतलब that means this is good to go. That means that infection being committed in the operating system. So then we again take the snapshot, और फिर उन दोनों स्नैपशॉट को प्रायर और पोस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ द मैलवेयर, प्रायर और पोस्ट दोनों को हम सेलेक्ट करके दोनों में डिफरेंसेस निकालते हैं. तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल्स, कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सी DLL, कौन सी रजिस्ट्री को इसका इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, क्या नया टास्क खुला, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, किस टाइप का एप्लीकेशन है. वी ऑल्सो डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग लेटर ऑन. ऐसे हजारों एक्टिविटीज हैं, बट दिस इज द प्रीलिमिनरी जॉब वेयर वी यूज्ड टू गो फॉर. सो वी आइडेंटिफाई द मैलवेयर्स लाइक दिस. एक एक करके मैलवेयर पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो जो उन्होंने किया है वो ढूंढते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको रिवर्ट बैक करते हैं. तो रिवर्ट बैक मैन्युअली करते हैं, और उसको एक C के प्रोग्राम में या शेल में या बैच फाइल में हम लोग लिखते जाते हैं. एंड विल ट्राई टू मेक अ ऑटोमेटेड टूल. एक पैच बना देते हैं. जब हमारे पास उसका एक पैच आ जाता है, वो सारे स्टेप्स बना लेते हैं. भैया अगर कोई आपने रजिस्ट्री डिलीट करी या मॉडिफाई करी, हम उसे रिवर्ट कर देंगे, उसकी नई एंट्री बना देंगे. कोई नई फाइल आई है तो ऐड डिलीट कर देंगे, और कोई पहले की डिलीटेड है जो कि चाहिए तो उसका एक अलग से लाइब्रेरी बना के उसको ऐड ऑन कर देंगे. समझ गए? सो वी ट्राई टू क्रिएट रिवर्ट बैक मॉडल. So जो भी gap होता है, we'll try to understand the gap analysis, and based on those gaps we identify their number of applications, number of activities being performed by these operating systems or these malwares, and accordingly we'll try to create a patch for that particular operating system, and we'll try to run those patch on the infected machines in the read-only mode. Okay, so our machine, our pen drives must be in the read-only mode, and or online will try to generate that packets and execute those models. तो हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि आपके सिस्टम को मिटिगेट करें और उसके इम्पैक्ट को हटाएं, और देन विल रीस्टार्ट एंड विल सी कि दोबारा कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं कर रही. इफ इट इज नॉट सो, we generate the patch, and even we share those patches to national vulnerability database NVDs, or we share to many these antivirus companies. They used to come to us and they'll purchase their such patches for that particular, और उसका एक malware का नाम रख देते हैं. That's it. So there are many different ways to analyze the malwares. पहला ये तरीका है. Then we'll go into the reverse engineering. Then we'll try to explore the data in the reverse engineering. We'll try to identify the backdoor methods
applications, connected applications with that particular activity, and then we'll try to mitigate. समझ में आ रहा है? यस सर। एंड सर मोबाइल फोन्स के लिए तो हमें आई थिंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए भी ऑफिशियल टूल किट्स आती हैं। android.com की वेबसाइट पे ही मिलती हैं ऑफिशियल। एक है प्लेटफॉर्म टूल्स के नाम से पूरा टूल किट है फॉर एंड्रॉयड, और विंडोज़ का है एक्स कोड, ये आईफोन वगैरह के लिए है एक्स कोड, मैक ओएस पे चलता है एक्स कोड। तो आप उस पे एक्स कोड चलाओ और इसमें एडीबी कमांड्स होती हैं, आप वो चलाओ, उससे हम ये ऑफिशियल टूल किट्स हैं, ऑफिशियल एंड्रॉयड के ही हैं, वो हम उसे जो है डेवलपर मोड में आपके मोबाइल्स को कनेक्ट करते हैं, एंड फर्दर वी ट्राई टू डू ऑल सच एक्टिविटीज़। उसमें असेट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मैलवेयर, बैकडोर, ये सभी, ये जो एक्टिविटीज़ वो सब कॉमन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बस ये समझ लो एंड्रॉयड और आईओएस क्या है, वो लिनक्स है, तो विल फॉलो द लिनक्स आर्किटेक्चर। तो एंड्रॉयड इज लिनक्स, नथिंग एल्स। आईफोन इज लिनक्स, मैकबुक इज लिनक्स। बस उसका फ्रंट एंड जो यूआई है, उसका जो ये कह लो जो शेल्स उन्होंने क्रिएट करी हैं या लेयर्स क्रिएट करी हैं, अपना कर्नल मॉडिफाई किया है ना, उनका ऐप डिप्लॉयमेंट मॉडल अलग है। बस यही सब चीजें तो अलग है, बाकी कोर तो कर्नल ही है ना, और वो लिनक्स कर्नल है। लिनक्स ठीक है, तो बेसिकली मार्केट में सिर्फ दो ही चीजें सही चल रही हैं। यहाँ तो एक आप विंडोज के अकॉर्डिंग चलते हो, विंडोज भी अभी हाइब्रिड मोड में चल रहा है, इसमें भी लिनक्स ही सारा है, जिसकी वजह से अपग्रेड ला रहा है। विंडोज का अपना आर्किटेक्चर यूज करना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज समहाउ आल्सो बेस्ड, विंडोज 11 का आप देखोगे ना इंटरफेस, वो मेरे 2011 के ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस जैसा है। मतलब लुक एंड फील अगर आप वो देखोगे, आप कहोगे अरे सर ये तो पूरा इसने लिनक्स को कॉपी कर लिया। श्योर, 100% श्योर। उसका सिर्फ लुक एंड फील, ग्राफिक्स को छोड़ दो तो बैकडोर सारा कुछ लिनक्स आर्किटेक्चर पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट भी, और इसीलिए WSL सपोर्ट देता है ऑन विंडोज, सपोर्ट टू लिनक्स, WSL सपोर्ट आता है। आप पूरा यूबुंटू जाके माइक्रोसॉफ्ट में जाके यूबुंटू इंस्टॉल कर सकते हो, तो सारे यूबुंटू की लाइब्रेरीज ओवरलैप कर जाएंगी और क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो काम कर रहा है। Got it? हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि सब कुछ जो कोर है वो लिनक्स ही है। फ्रंट एंड लुक एंड फील कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट। बट बैकडोर अगर आपको लिनक्स आर्किटेक्चर अच्छे से आता है, उसके ऊपर आप मैलवेयर और उसके बिहेवियर एनालिसिस पे काम कर सकते हो, देन हार्डली मैटर्स, you can retrieve every single thing out of it. ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? गॉट इट सर। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इस तरह से आप लोग सब प्रैक्टिकल्स करके देख सकते हो, बड़ी सारी चीजें हैं निकलती हैं। अदरवाइज थर्ड पार्टी टूल्स तो हजारों हैं, आपको गूगल करोगे तो यू विल फाइंड मेनी थर्ड पार्टी टूल्स। वो बैकडोर में काम यही कर रहे हैं जो मैं मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ। व्हाट दे आर डूइंग इन द बैकडोर, वो थोड़ी फैंसी तरीके से, मतलब उनके यूआई में ना यूआई दे देंगे ना, यूआई दे देंगे तो यूआई के हिसाब से आप काम करोगे। बस आपको लगेगा अरे बटन क्लिक करा और रिजल्ट आ गया, वो बस वो काम कर रहे हैं। लेकिन बैकडोर कैसे है, काम रियल टाइम में क्या हो रहा है, रियल टाइम में यही हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए I generally never prefer any third party tools, क्योंकि आज वो काम कर रहा है, कल नहीं करेगा तो क्या करोगे। उनका वो फिर वो शुरू हो जाएंगे, 1 साल का लाइसेंस लो, AMI का वो कुछ वो AMC करवाओ और रिन्यू कराओ लाइसेंस, ये वो सब पैसे मांगते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो जो रियली जिसका काम ही यही है ना, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट में जब हम लोग जाते हैं, अब वो थोड़ी R&D करने बैठेंगे, वो मजे लेने के लिए नहीं बैठे ना। उनको कहीं चाहिए, उनके पास तो लाइन लगी पड़ी है मशीन्स की, उन्हें चाहिए इधर मशीन कनेक्ट करूं सर, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट के अंदर, मेरे को 10 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट आ जाए, मैं रिपोर्ट जमा करूं, कॉपी करूं, प्रिंट निकालूं, अपने सीनियर अथॉरिटी को जमा करूं, मेरा काम खत्म।
उन्हें मतलब ही नहीं है उसके अंदर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. सो बेसिकली दे वांट अ जस्ट ऑन क्लिक, दे वांट यूआई ऑन क्लिक. बस इधर डिवाइस को मैं केबल लगा दूं या वाईफाई से कनेक्ट करूं और उधर ऑन क्लिक करूं और मेरा काम सब कुछ अपने आप होता है. दिस इज व्हाट लॉ एनफोर्समेंट वांट्स. दे वांट परफेक्ट यूआई, क्योंकि उनका काम आर&डी थोड़ी है, उनका काम है रिपोर्टिंग. तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का मॉडल अलग है. और जहां थर्ड पार्टी चीजें काम नहीं करते तो फिर वो लोग हमें बुलाते हैं कि सर अब आप आ जाओ और आप ही करो कस्टमाइजेशन और आप निकाल के बताओ इसमें क्या होगा. So that is why we are the consultant to almost all the law enforcement agencies in India. Even I support to some foreign agencies as well. तो आपको ना आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होंगे आई थिंक यू कैन परफॉर्म वेरी वेल. बट ये स्लो एंड ग्रेजुअली काम होगा, राइट? Yes, sir. हाँ, आपको ना बेसिक आपका जो टेक्नोलॉजीज है वो बड़े साउंड होने चाहिए आपके, बड़ा थॉरली क्लियर होने चाहिए. नेटवर्क्स का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, लाइनक्स आर्किटेक्चर का, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स का, ये सब आपके क्लियर होंगे. और उसके बाद एक एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं, उसके बाद वेब एप्लीकेशन का भी, क्योंकि मोबाइल और वेब आर्किटेक्चर में वेब एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट ज़्यादा चल जाते हैं. तो एक एक करके पकड़िए, एक एक करके स्टार्ट करो एंड गेट इनटू एंड टेक अ डीप डाइव. सब धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है. बट उसके लिए ना बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. Correct. ठीक है जी, तो बेसिक्स क्लियर करो, हो जाएगा. सब आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है. बस ये टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है और पैशन मांगता है. साइबर सिक्योरिटी ऐसा है, ये हर रोज कुछ नया दिखाएगा. हर रोज कुछ नया प्रॉब्लम, कोई नया केस, कोई नया इशू, कोई नया बिहेवियर, कुछ ना कुछ निकलेगा. तो with your experience, whatever you are doing, with your experience in the area where you have the expertise, if the things are related to that, you must explore and try to identify how it works, what the activity being performed by those malwares, and just because of it, what are the impacts, and then how to mitigate. So basically our job is to implement the cyber security. We are the core implementer of cyber security. लेकिन सिक्योरिटी थर्ड लेयर पे है. पहला है आपकी नॉलेज, सेकेंड है आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू हैक, हाउ दैट टेक्नोलॉजी गेट हैक्ड, एंड थर्ड हाउ टू मिटिगेट, हाउ टू सिक्योर. तो तब साइबर सिक्योरिटी आएगी. Thanks. टॉपिक कोई ले लो, डोमेन कोई ले लो, एरिया कोई ले लो, आप जिस मर्जी एरिया में कंफर्टेबल हो. सपोज कोई कहता है सर मैं तो मोबाइल ऐप अच्छी बनाता हूँ, कोई कहता है सर मैं तो डेटाबेस अच्छा यूज़ करता हूँ, कोई कहता है मैं तो सर ऑनलाइन सोशल मीडिया में हूँ. अरे भाई आप सबको चाहिए साइबर सिक्योरिटी. आप ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, आप प्रोग्रामिंग में हो, आप नेटवर्क में हो, आप कहीं आप मल्टीमीडिया में हो. आज वीआर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, है ना. आज नए बैकडोर्स आ गए हैं, ब्लॉकचेन्स और दुनिया जहाँ के आपका बिग डेटा, डेटा स्टोरेज, डेटा नेटवर्क्स, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स, है ना. और ऐसे हज़ारों प्रोटोकॉल्स हैं जिनके साथ आपको डेटा को कोरिलेट करना है. मर्जिंग, डेटा एग्रीगेशन, डेटा परफॉर्मेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी के साथ विद मशीन लर्निंग, एआई विद साइबर. तो सबके ऊपर साइबर सिक्योरिटी रहेगा. कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, पुरानी टेक्नोलॉजी आ जाए, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि जहां आप कुछ काम करोगे उसका जो पैच बन जाएगा और आपका सारा कुछ हैक हो जाएगा. आप सोचो इतनी मेहनत करके आपने 6 महीने साल लगा के एक बढ़िया सी ऐप बनाई, कोई हैकर आया 2 घंटे में हैक करके चला गया. तो मतलब क्या है, मतलब ये है आपको ऐप नहीं बनानी है. ये थर्ड पार्टी ऐप बनाने वाली वेबसाइटें मिलती है ना, आओ फटाफट आप बस नाम लिखो, लोगो लगाओ, आपकी ऐप बन गई. अरे नेवर गो फॉर दीज काइंड ऑफ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स. मोबाइल ऐप बनाने वाले ऐसे बहुत मिल जाएंगे ऑनलाइन. वो बैकडोर छोड़ते हैं पीछे, आपके लिंक्स होंगे उसमें,
वो आपको एपीके बना के दे देंगे आपके नाम से। कंपनी का नाम फ्रंट एंड आपका होगा, यूजर नेम आपका होगा, आप अपने नाम से वो उसको प्रमोट करोगे, अपने लिंक अपने उससे अपलोड करोगे, आप डिजिटल एविडेंसेस छोड़ोगे, फुटप्रिंट छोड़ोगे, और बैकडोर में मजा कोई और लेगा, हैक कोई और करेगा किसी को। So why you are doing such activities, you should understand that what is the criteria, how it works, and what type of permissions they are being granted, and at what stage what type of data they are accessing. ठीक है जी? Yes, sir. Right. Perfect. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में क्या क्या है जी, क्विकली बताओ। Can you name some utilities or some inbuilt application which are related to operating system security? Can anyone name some operating system security applications, inbuilt application? Third party नहीं, third party तो कुछ भी डाल दो। I think Microsoft runs Defender. हाँ, पहले very good, Defender रन करता very good. One is Microsoft Defender, Defender. Yeah. very good. उसके अंदर आपका एंटी मैलवेयर ऑलरेडी है, एंटी रैंसमवेयर। मैलवेयर पता क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, Malicious software. Yes. है ना। उसके अंदर क्या क्या आता है? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन्स, रूट किट्स, बॉट्स, है ना, क्रॉलर्स, स्पाइडर्स, उसके बाद स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स, है ना, उसके बाद आपके शेल्स, और उसके बाद आपके ये रैंसमवेयर्स। ये सब मैलवेयर की कैटेगरी के अंदर के पार्ट है, और सबका बिहेवियर अलग अलग है। फॉर मोर डिटेल्स इन सबको अलग से थ्योरी जरूर पढ़ना, क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ मैलवेयर, या कोई स्पेसिफिक मैलवेयर डिफाइन कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स or trojans, what do you mean by trojan horses, how it works, how it performs, how you mitigate, how you control, और वहीं आप सब मार्क्स कटवाते हैं। आपको लगता है आपने सब कुछ सही लिखा है, जबकि सब आपको आपको उसका बेसिक, आप ना जर्नल इंग्लिश लिखने लगते हो, मैलवेयर आएगा, सिस्टम खराब कर देगा, फाइल खराब कर देगा। अरे भैया ऐसी चीजें मत लिखो, दिस इज नॉट द आंसर। योर आंसर शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, वेरी मच कनेक्टेड। ट्रोजन्स भी यही काम कर रहे हैं, वायरस भी यही काम कर रहे हैं, वॉर्म्स भी यही काम कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्यों है? फिर एक ही नाम क्यों नहीं है? उसका रीजन है आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा। तो जब आपके एग्जाम पेपर्स चेक होने आते हैं ना, तो ये बड़ा कॉमन इश्यूज मिलते हैं कि आपने बड़ा जेनरिक लिखा होता है। नेवर राइट ओनली जेनरिक, वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट रियली यू आर राइटिंग द टेक्निकल वर्ड्स ओवर देयर और नॉट। So, sir, If there we find architecture the technical words, 10.7. we'll give you best marks. समझ रहे हो? अब ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय ट्रोजन्स? क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या बिहेवियर होता है? So Trojan basically personate some kind of legitimate software first, and they leave the back doors and for stealing the data. Like, and I read about this, the Trojan horses. There's a myth, geek stories there. So that the name comes from there, like the war between the Greeks and the Trojans, and the Greeks gifted या घोड़े some वाला wooden स्टोरी है, horses. correct. Yeah, yes. That is the name came from, and the same purpose that the Trojan horse is doing. They personate some kind of legitimate antivirus. We can say any antivirus software. We install it, but in actually they leave some services and backdoors open for the malicious action. गुड। देखो, अब आपका अगर मैं रेट करूं, अगर मुझे 5 नंबर्स में से आपको मार्क्स देने हैं ना, सच बताऊं आपके मार्क्स बनते हैं 1 या 2 नंबर। ये भी तब क्योंकि आपने 1 या 2 लाइंस बड़ी अच्छी बोली हैं, वो वर्ड बोले हैं आपने। मुझे पूरा पेपर अगर आपका चेक करना है और आपके एग्जामिनेशन में मुझे ये, जब मैं पूरा आपका स्टेटमेंट, अगर सपोज आप यही लिख के आ गए, क्वेश्चन आया एक्सप्लेन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है लेट से, और आपको बोला गया कि ट्रोजन एक्सप्लेन करो, तो भाई ट्रोजन एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसके कुछ ट्रोजन्स के नाम, उसका टेक्निकल बिहेवियर लिखना है। आपने 1-2 लाइन बड़ी अच्छी बोली, वो बैकडोर खोलता है। सिर्फ आपकी ये वर्ड बोलने पे कि वो बैकडोर खोलता है, मैं आपको 1 या 2 नंबर दे रहा हूँ।
बाकी मुझे सब फालतू इंग्लिश समझ में आई. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. ऑल्दो पेपर भरने के लिए, पेजेस भरने के लिए बहुत अच्छा है, समझो. हम ना वेट नहीं चेक करते कि आपने 4 पेज भरे, 3 पेज भरे तो आपको उतने मार्क्स दे दे. नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू चेक द एग्जाम पेपर्स. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब कोई बैकडोर खोल रहा है तो भैया पोर्ट खोलेगा ना, और पोर्ट खुलेगा तो बेसिकली इट इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. तो आपको टेक्निकल आंसर ये देना है, ट्रोजन्स आर द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोग्राम्स वेयर द हैकर्स ट्राई टू implement two different applications. One is server side, one is client side, and they try to make the target machine as a server, and being a hacker online, they can hack your data from the targeted machine anytime, because they try to open the back doors. यहाँ आपका backdoor word आया है ना, because they try to open the back doors on the target machine along with some port numbers, and if there is certain port numbers to connect with via those port numbers without any authentication, such application being prepared. It is just similar like, अब इसका examples भी दे रहे हैं. It is the, as we compare with the legitimate. अब आप legitimate word को कहाँ use कर रहे हो, थोड़ा सा clear होना चाहिए था. If we let us compare with the legitimate application and Trojan applications. So AnyDesk, TeamViewer are the legitimate application which generally used for the troubleshooting. They ask for a key code or a passcode or some username password, so that the target machine share their machine services to remote user with their code, with their front end, and on that basis any person can able to give a remote control, remote application accessibility to any third party machine in the globe. That is the legitimate application. But Trojans, they don't have authentication, they don't have authorization, they only use to deploy a one backdoor by sharing the links. अब ये spread कैसे होता है, टेक्निकली काम कैसे करता है, इसका कंपैरिजन किसके साथ, कौन सा लेजिटिमेट एप्लीकेशंस के साथ हैं, और इसका बैकडोर क्या होगा, वो डेटा थेफ्ट कर सकता है, वो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकता है ना, और उसका कोई फ्रंट एंड यूआई नहीं होता है जैसे एनीडेस्क का होता है या टीम व्यूअर का होता है. उनका कोई फ्रंट एंड यूआई नहीं होता है. दैट इज ऑल बैकडोर. एंड द डे योर सिस्टम गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, इसका इम्पैक्ट यूजर को कैसे पता चलेगा, यूजर को पता चलेगा उसका सिस्टम स्लो चल रहा होगा, प्रोसेस अननेसेसरी ओपन होंगे. नेट स्टार्ट कमांड डाल के हम चेक कर सकते हैं मेरा बैकडोर पोर्ट कौन सा खुला हुआ है, और अगर वो खुला है, अननोन पोर्ट नंबर खुला हुआ है मेरी मशीन में, तो आई हैव टू बी क्वाइट कॉशियस अबाउट इट. I need to investigate what all the services being running on that port, and if I identified if it is an anonymous, what is the best practice to mitigate? The best practice to mitigate, identify कब करेंगे, remove होगा नहीं होगा, कितना technical depth है, that is a different case altogether. But at the instant security part, first, either we can stop the internet, which is the best practice. Second, even if I can't able to stop the internet services, I should go into the Windows Defender, open firewall, and I should add the policy, the new rule to block that IP address or to block that port number for all the applications, so that nobody can access that port. क्योंकि बैकडोर में पोर्ट खुला हुआ है, तो फटाफट हम जाके 1 मिनट का काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल में उसकी पॉलिसी लिख के उस पोर्ट को परमानेंटली बंद कर दो. इससे पूरा इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा, तो मेरे मशीन से वो पोर्ट नहीं खुलेगा, तो एटलीस्ट हैकर मेरे को उस पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा. एंड देन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेरा वो पोर्ट खुला क्यों है, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर इशू. सो दीज आर द वेज टू फिगर आउट हाउ टू मैनेज द ट्रोजन्स एंड टू मिटिगेट द ट्रोजन्स. अब मुझे आंसर आपसे ये चाहिए, अब आपका आंसर और मेरे आंसर में कितना डिफरेंस था, है ना. एग्जाम Yes, Right. yes, sir. Actually, what happened? I just explained it without the more practical aspect. So we should have the more practical aspect to explain anything theory. राइट, Okay. बेटर है टेक्निकल आंसर्स लिखो ना, डोंट बी जर्नलाइज्ड आंसर, डोंट गिव जर्नलाइज्ड आंसर.
फिर हम कहेंगे वायरस क्या करता है, वायरस भी बैकडोर खोलता है। आप लिख दोगे तो अगर मैं लिख दूं क्वेश्चन आपको देता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बॉम्ब्स या वायरस एंड ट्रोजन्स, तो लगभग लगभग आपका वही होगा, वो मैलिशियस है, वो फाइलें खराब करता है, वो बैकडोर खोलता है। अरे बैकडोर वो भी खोलता है, वो भी खोलता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों को अलग नाम क्यों दिए गए हैं? ये एक साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मोस्टली आंसर्स अच्छे नहीं आते और इसलिए मोस्टली मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो मार्क्स अच्छे लेने हैं तो थ्योरी में आपको बड़ा प्रैक्टिकली आंसर्स लिखने हैं। आंसर मतलब वही, अब मैं आपने लिखा ना, मैंने क्या कहा, पूरी आपकी पूरी स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई जो मेरे काम की थी, और मैंने पूरे पेपर में आपका पूरा अगर पैराग्राफ चेक करूंगा उसमें आपने लिखा बैकडोर खोलता है। बस इस वर्ड पे कि बैकडोर खुलता, मैं आपको 1 नंबर 2 नंबर दे के आगे बढ़ जाऊंगा 5 में से। लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कैसे, और उसमें ना अलग अलग स्टेप्स में लिखा करो। पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड लिखो इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड होता है इम्पैक्ट, फोर्थ होता है मिटिगेशन, फिफ्थ होता है कंक्लूजन्स। कुछ पॉइंट्स इस तरह के बना के लिखो, इसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो काम कैसे करें, इसमें टेक्निकल चीजें लिखा करो, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली द डेप्थ। अगर हमने एक ही नंबर में मांगा है तो इतना लिखने की क्या जरूरत है, मेन मेन चीजें लिखो ना। अगर हमने 2 नंबर में मांगा है, 2.5 नंबर में मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा लिखो। 5 नंबर में डिफरेंट है, और अगर 10 नंबर में मांग लिया तो कितनी थ्योरी लिखोगे बताओ, कितने पेजेस भरोगे? अगर हम पेज काउंटिंग पे चलने लगे तो 10 नंबर में मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेन ट्रोजन्स इन 10 मार्क्स, तो फिर आपका तो पैराग्राफ ही नहीं होगा, ज्यादा आपके पास डेटा ही नहीं होगा लिखने को, क्योंकि आप बड़ा जनरलाइज लिखते जाओगे और फिर मार्क्स कहां से आएंगे? तो दैट इज अ गैप। यू शुड बी साउंड इन टेक्निकल पार्ट। मजा आएगा हमें पेपर चेक करने में भी। और मैं नहीं, मतलब मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी जेनरिक मॉडल, कैसे एक एग्जामिनर को क्या चीजें चाहिए होती हैं इन टर्म ऑफ टेक्निकल। हम टेक्निकल पेपर चेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट टेक्निकल वर्ड्स लिखो ना। बैकडोर्स बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया। अरे पोर्ट्स ओपन करता है बैकडोर के साथ, सिंपल है ना। तो पहले पोर्ट्स का तो पता हो कि पोर्ट्स होते कितने हैं, व्हाट आर पोर्ट्स, व्हाट आर द यूज ऑफ दोस पोर्ट्स, और मेरे सिस्टम में कौन सा बैकडोर पोर्ट खुला है और क्यों खुला है, तो समझ में आ जाएगा ना। अरे इसका मतलब ये तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, एक क्लाइंट का भी पोर्ट खुलेगा और एक सर्वर का भी खुलेगा। सर्वर पे अगर पोर्ट 80 खुला है तो वो वेब सर्वर है, अगर सर्वर पे 443 खुला है तो वो HTTPS सर्वर है, सर्वर पे 21 खुला है पोर्ट नंबर तो वो FTP सर्वर है, सर्वर पे पोर्ट नंबर 25 खुला है तो वो SMTP सर्वर मतलब मेल सेंड करने वाला सर्वर है, सर्वर पे पोर्ट नंबर 53 खुला है तो वो DNS सर्वर है ना। तो हर एक सर्विस का एक पोर्ट नंबर है, और अगर मेरी मशीन पे डेडिकेटली कोई पोर्ट खुला है, अभी आपको मैं दिखाता हूं मेरी मशीन में डेडिकेटली पोर्ट कैसे खुले हैं। वो देखने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। लाइनक्स में कमांड है nmap, विंडोज में आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो zenmap, ZENMAP, ये इसी का एक ग्राफिकल वर्जन है वो, ठीक है। तो बस मैंने nmap किया, ठीक है। क्या कह रहा है, ओके ओके ओके। सो nmap स्पेस टारगेट भी देना होता है, टारगेट है लेट्स से लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा तो ये कह रहा है मेरी मशीन में पोर्ट नंबर 22 खुला है, अरे SSH सर्वर है मेरी मशीन पोर्ट 80 खुला है मतलब वेब सर्वर भी है। मेरी मशीन में 631 पोर्ट खुला है मतलब ये एक प्रिंटर सर्विसेज भी दे रहा है। मेरी मशीन में SQL सर्वर है इसलिए पोर्ट नंबर 3306 खुला है। मेरी मशीन में टॉर एप्लीकेशंस डली हुई हैं जो कि टॉर नेटवर्किंग में कई बार मैं यूज करता हूँ, टॉर अनियन राउटिंग यूज करता हूँ, तो उसके लिए पोर्ट नंबर 9040 9050 खुला है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम में टॉर मैंने डाला या नहीं डाला, किसी और ने डाला, और अगर किसी और ने डाला तो मुझे नहीं पता ये टॉर एप्लीकेशन है या नहीं, लेकिन मुझे पोर्ट मिल गए ना, मैं पोर्ट उठा के फायरवॉल में बंद कर दूंगा तो मेरे से कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, चाहे सॉफ्टवेयर डला रहे, सॉफ्टवेयर मेरी मशीन में रहे, वो डमी पड़ा रहेगा तब तक, क्योंकि कोई मेरे पोर्ट पे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज द पोर्ट इज ओपन। सो व्हाट आई कैन डू by using the concepts of firewall, let me try and mitigate it. This is my first practice. I simply go to the firewall, write the incoming, है ना, एक होता है इनबाउंड एक होता है आउटबाउंड, तो इनकमिंग पैकेट्स जितने हैं वहां के लिए उसके लिए एक पॉलिसी लिख दूंगा और कहूंगा जो भी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 9040 पे आए
उसको बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, डू नॉट अलाउ, बात खत्म। मेरी मशीन में मैलवेयर पड़ा है लेकिन कोई थर्ड पार्टी मेरे मशीन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा बाय यूजिंग दीज पोर्ट्स। तो आप पोर्ट स्कैन करो अपनी मशीन पे, पोर्ट स्कैन करो नेट स्टैट कमांड से, और इससे मैलवेयर को हम मिटिगेट कर सकते हैं। मैलवेयर अलग अलग है। अब रैंसमवेयर चल रहा है आपकी मशीन में तो कैसे पता चलेगा? अरे बहुत सारे बैकडोर पोर्ट कनेक्टेड होंगे। सेकेंड, वो सारा का सारे डेटा फाइल्स को प्रोसेस कर रहा होगा। कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो एकदम हाई लेवल पे कंज्यूम करेगी आपका प्रोसेस, सीपीयू यूटिलाइजेशन लगभग 100% हो जाएगा, वो आपके डेटा फाइल्स ढूंढ रहा होगा, पीडीएफ, डॉक फाइल, एक्सेल फाइल, सारे डेटा फाइल्स, और सब डेटा फाइल्स को ऊपर इंक्रिप्शन लगा रहा होगा, और इंक्रिप्ट करके उसकी एक प्राइवेट पब्लिक की होगी, और उसकी प्राइवेट की को छुपा के कहीं रख देगा आप ही की मशीन में, या खुद ले जाएगा, और फिर आपको एक बढ़िया सा इंटरफेस देगा, आ जाओ जी, योर मशीन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद रैंसमवेयर, नाउ यू पे मी इन बिटकॉइंस, देन ओनली आई विल गिव यू द की, अदरवाइज भूल जाओ, तुम्हारा डेटा तुम खुद नहीं खोल सकते, तुम्हारा डेटा तुम्हारी मशीन में ही अरेस्टेड है ना, होम अरेस्ट हो गया तुम्हारा डेटा। Right. So these are various malwares, various different types of malwares. Please, for your more details, must go through and find the real practical difference of virus, worms, trojans, rootkits, bots, adware, spyware, right? And these kind of ransomwares, etc. क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में ना, मैलवेयर है तो अब वो कैसे भी घुमा के आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको ढंग से एक बार मैलवेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो पहले इंट्रोडक्शन, थ्योरी, सेकंड टेक्निकल पॉइंट्स, कैसे वो काम करता है, थर्ड उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे, ब्लॉक कैसे करेंगे। अगर आप ये स्टेजेस में आंसर लिखते हो 100% बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। और आप इंग्लिश लिख रहे हो, बड़ी सारी कहानियां सुना रहे हो, लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, कुछ भी लिखी जा रहे हो, तो हमें ना, हम फिर शायद ज़्यादा पढ़ते भी नहीं। अगर जब हम पेपर चेक करने लगते हैं हम देखते हैं अरे यार इसने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, हमें कहीं रेलेवेंट वर्ड कहीं दूर पे पूरे उसमें पेजेस में नज़र आ गया तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको मार्क्स देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ। आप रीचेकिंग में भी डाल दो तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं चलो नहीं आया, पास नहीं हुआ तो रीचेकिंग में डाल दो, 2 4 5 नंबर से फेल हो रहे हैं तो ठीक है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, एम ही दे दे आपको तो एक अलग बात है, बट जनरली टेक्निकल आंसर ही नहीं है तो आपको रीचेकिंग में तो और ज़्यादा स्क्रूटनाइज होता है कंटेंट। इसलिए थ्योरी पढ़नी है तो विकिपीडिया से पढ़ना, थ्योरी पढ़नी है तो विकिपीडिया से पढ़ना, पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ना, एग्जाम्पल्स पढ़ना, और उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, फीचर्स के बारे में लिखना, मजा आएगा, पेपर में भी अच्छा लगेगा आपको। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है जी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बताओ। पहला आपने बताया डिफेंडर। डिफेंडर में क्या क्या है? एक है एंटीवायरस, है ना, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, एंटीवायरस, ये सारे फीचर्स हैं आपके डिफेंडर में इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11। विंडोज 10 से पहले में नहीं थे, ठीक है, रैंसमवेयर नहीं था पहले, अभी लेटेस्ट में रैंसमवेयर को भी मिटिगेट किया गया है। इसके अलावा उसमें होता है फायरवॉल। फायरवॉल जो है होस्ट बेस्ड फायरवॉल है, तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेसेस, बैकडोर्स को रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए फायरवॉल का आंसर बिल्कुल ठीक है। उसको भी थोड़ा इलैबोरेट करो। इनकमिंग पैकेट्स, आउटगोइंग पैकेट्स या पैकेट फॉरवर्डिंग, 3 डिफरेंट स्टेजेस पे काम करता है फायरवॉल। तो विंडोज में फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देख लो एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका होता है ऑथेंटिकेशन। अरे भाई अभी तो 2 फैक्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, बायोमेट्रिक्स आ गए, यूजर नेम पासवर्ड तो होता ही है, प्लस ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है, अगर आपने जेन्युइन विंडोज नया लैपटॉप लिया है तो वो वहां पे क्या होता है, आपसे कहता है कि अपना ईमेल आईडी डालो माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो outlook.com या ऐसा कोई भी आप ईमेल आईडी डालते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट और वो ऑफिस और वो सारे फीचर्स को आपको इनेबल करके आपके विंडोज में दे देता है।
ठीक है। और उसमें अगर कहीं हार्डवेयर सिक्योरिटी है, जैसे थंब इम्प्रेशन या फेस रिकॉग्निशन या कैमरा से, ये सारे अगर फीचर्स हैं तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन साथ में देता है। तो बेसिकली CIA 3 मेजर पार्ट है: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इंटीग्रिटी चेक्स के लिए, इंटीग्रिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, यूजर प्रेफरेंसेस को चेक करने के लिए, ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है ना, ऑथेंटिकेटेड टू विच पर्टिकुलर कंटेंट, विच ड्राइव, वो अलग है कॉन्सेप्ट। तो यूजर नेम पासवर्ड एक ऑथेंटिकेशन, एक सर्विस। दूसरा आपका स्पेशली आप लोग ये बात करते हो इसकी डिफेंडर वाली, डिफेंडर के भी बड़े सारे फीचर्स। इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है जी डिस्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के साथ डिस्क सिक्योरिटी। जैसे बिट लॉकर, आप अपनी ड्राइव्स को, पार्टीशंस को इंक्रिप्ट कर सकते हो, बट ऐसे डायरेक्ट करना मत। हम कॉर्पोरेट में करवाते हैं स्पेशली, और होम यूजर को कहते हैं मत करना। उसका रीजन है, कॉर्पोरेट यूजर का डेटा उसकी मशीन में होता ही नहीं है। यानी आज आपकी मशीन, आपका लैपटॉप कहीं गुम हो गया तो आप कहोगे मेरा डेटा भी गया। अरे भैया, वहां तो सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है, उनके फाइल सर्वर्स होते हैं, वहां पे डेटा सेव होता है। तो कॉर्पोरेट का डेटा लॉस कोई मतलब ही नहीं है, 100% डेटा ही तो सिक्योर है कॉर्पोरेट में। डिवाइस तो एक आनी जानी चीज है जी। आज आपको ये डिवाइस अच्छा लग रहा है, ये यूज कर लो, कोई और अच्छा लग रहा है, कोई और यूज कर लो, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई और यूज कर लो। ये तो आपके यू नो जो भी आपका वर्किंग कल्चर है, जिस भी आप प्रोजेक्ट पे डेडिकेटेड हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। बट टेक्निकली योर डेटा नेवर एवर बीइंग स्टोर्ड ऑन योर लैपटॉप्स, नेवर एवर, इवन विद योर मोबाइल्स। ये हैबिट बनानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सर्विसेज देते हैं, मालूम है? हम लोग आपके घर में आपके लिए एक सेल्फ FTP सर्वर्स, स्पेशल टाइप के ऑनलाइन, जैसे गूगल ड्राइव के सर्वर्स होते हैं ना, कस्टमाइज आपका खुद का ड्राइव सर्वर्स बना देंगे, ताकि आपकी फैमिली के सभी लोग अपना डेटा घर के ही कंप्यूटर में डाल सके, चाहे आप पूरे ग्लोब रोमिंग में रहो, ग्लोबली कहीं पे भी लोकेटेड रहो। आपका डेटा आपके ऑथेंटिकेशन में, आपके लेयर में, आपके घर पे स्टोर होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देते हैं, AMCs भी देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं। उससे क्या होगा? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी कर रहे हो आप गूगल ड्राइव पे डाल दो, या एप्पल के उस पे डाल दो, ड्राइव पे, और फिर वो लोग छोटा सा देते हैं, और जैसे जीमेल देता है 15 GB, वो देता है शायद 5 GB, और उसके बाद हर महीने आप उन्हें पैसा देते रहते हो। तो या तो आप उन्हीं को पैसा देते रहो, कितना दोगे आपकी मर्जी, जितना आप एक साल में उनको पैसा दोगे उतने में तो आप अपने घर में पूरा नया हार्डवेयर ले आओगे, और फिर वाईफाई का इंटरनेट तो आप ले दे ही रहे हो, पेमेंट तो कर ही रहे हो, वाईफाई थोड़ी हमने बदलना है। जब आप इंटरनेट का पैसा दे रहे हो तो बाहर क्यों दे रहे हो? और एक साल के लिए तो लोगे नहीं, आपके आईफोन एक साल के लिए लोगे, या गूगल का फोन, ऑब्वियसली एंड्रॉइड लोगे तो क्या जीमेल एक लोगे क्या? तो फिर लोग क्या करते हैं, चलो अब मल्टीपल ईमेल आईडी बनाएंगे, फ्री बनाने के चक्कर में 15-15 GB के 10 ईमेल आईडी बना दिए, तो भी 150 GB हुआ ना। अरे घर में जाके 2 टीवी लगा दो यार, इतने की है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए में तो रेगुलर वाली हार्ड डिस्क आ जाती है। और SSD लोगे तो आपकी मर्जी, जितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से आते हैं। अदरवाइज एक रेगुलर वाली एक्सटर्नल वाली हार्ड ड्राइव ले लो, आजकल तो 1000, 1500, 2000 में 1 TB 2 TB मिल जाती है। 1 TB 2 TB में तो अपने पूरी फैमिली का, अपने पूरे SME, स्मॉल और मीडियल स्केल एंटरप्राइजेस के सारे इंप्लॉयज का डेटा एक ही हार्ड ड्राइव में डाल दो ना, और उसका बैकअप रख लो। वो हम सब रेड और वो सारे आर्किटेक्चर आपको रेडी करके दे देंगे, आप ही के नेटवर्क में, आप ही के कंप्यूटर्स में, और आप चाहे कहीं पे भी रहो। फिर मोबाइल चल रहा है, मोबाइल गुम हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है, नहीं चल रहा है, डेटा चाहिए, डेटा सिक्योर है। ये कल्चर लाना पड़ेगा, डेटा सिक्योरिटी कल्चर है, ये लाना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट में हम बोलते हैं बिट लॉकर लगाओ विंडोज में, मैंडेटरी है, ताकि कल को आपका लैपटॉप गुम हो जाए तो कोई और डेटा एक्सट्रैक्ट ना कर सके। कंपनी का डेटा है, वैल्यूएबल है, कॉन्फिडेंशियल है। बट व्हाट अबाउट होम यूजर्स? होम यूजर बेचारे मुश्किल से कोई एक हार्ड ड्राइव खरीदते हैं, और लैपटॉप में ही अपनी या तो बड़ी वाली हार्ड डिस्क स्पेस ले लेते हैं।
और उसी में कहते हैं भैया डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ, भर जाएगा और फिर स्लो हो जाएगी मशीन, फिर परेशान होगे, फिर नई एक हार्ड डिस्क लाओगे, अगले दिन वो हार्ड डिस्क गुम जाएगी या गिर जाएगी, तो फिर सारा डेटा पुराना गया। तो ये होम यूजर्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो हाउ यू विल मैनेज, वेयर इज योर डेटा, how to secure your data, always focus on data security, data is more crucial part। ransomware भी डेटा पे हिट करते हैं, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम खराब करके क्या मिलेगा, आप दोबारा फॉर्मेट करके डाल लोगे यार। डेटा खराब कर देंगे तो अब आप रोगे कि मेरे को तो मेरा डेटा चाहिए। अकाउंट्स का डेटा है, 10 साल पुराना डेटा है, आज रैंसमवेयर आ गया, 10 साल का डेटा गायब, उड़ गया। हार्ड डिस्क में रखा बैकअप वो भी इंक्रिप्ट हो गया, वो भी उड़ गया। अब क्या करोगे, वो डेटा कहाँ से लाओगे? 10 साल पुराना डेटा है, फाइलें भी हैं या नहीं है पता नहीं कहाँ है। मोस्टली वो टैली या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या जो भी आप ईआरपी सीआरएम वो सब यूज कर रहे हो, उससे जो डेटा क्रिएट हुआ सब इंक्रिप्ट हो गया। तो फाइनली आप कहोगे भैया रैंसमवेयर दे दे, जितने पैसे लेने ले ले, मेरा मेरा डेटा वापस कर दे। तो this is the challenge. We are supposed to take care of our data. Our main priority is towards data security rather than device security. डिवाइस खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, आज हार्डवेयर है भाई, हार्डवेयर तो हार्डवेयर है, आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा, कहाँ जाओगे? फिर लगोगे डेटा रिकवरी करा दो, नेहरू प्लेस भागें, डेटा रिकवर करवाएं या कहीं और जाएं या ऑनलाइन देखें। वो इतना पैसा लेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। Seriously, on security notes, especially if you are into cyber security, think about your data protection। और मैं कहता हूँ फ्री रखना है, अरे जीमेल यूज करना है तो भी यार इंक्रिप्शन तो यूज करो। अपना डेटा क्यों गूगल को दे रहे हो? क्यों अपनी फोटोज, आप कहीं इवेंट में गए, सारी फोटोज आपने क्लिक करी, सारा डेटा गूगल ड्राइव पे डाल दिया और ड्राइव में भरी जा रहे हो भरी जा रहे हो भरी जा रहे हो। आपको भी याद नहीं होगा एक टाइम बाद के कितने जीमेल आईडीज बनाए थे, और कहीं एक रैंसमवेयर आ गया, कुछ हो गया तो सारे जीमेल के पासवर्ड भी भूल जाओगे। तो नेवर गेट इनटू दैट मेस। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? यू शुड think about data encryption, keep the backups in a proper way, ना appropriate way। क्लाउड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है क्लाउड में रखने का, लेकिन क्लाउड का पैसा कितना लग रहा है? एप्पल ड्राइव भी तो है ना, क्लाउड पे डाल दो, एप्पल का ही है, गूगल का भी है, गूगल ड्राइव ले लो। लेकिन उनको जो इतना इतना पैसा, और वो फिर सारी जिंदगी आपके साथ, आपकी कमाई का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप इन क्लाउड प्रोवाइडर्स को देते रहोगे, सारी जिंदगी देते रहोगे। सो व्हाई यू गेट इनटू दैट मेस? एक साल में आप विन विन सिचुएशन में आ जाओगे, जो आपने अपने घर में एक सेटअप लगाया, और अगर वही सेटअप आपका 3 साल 5 साल 10 साल चल गया तो आप पता नहीं मेरे ख्याल से लाखों रुपए आप सेव कर लो, बिकॉज यू हैव टू पे एक्चुअली मंथली। सो think about data security, think about such projects where you can implement, you can work out, and it's always good to go in this way। एप्पल ड्राइव पे रखो, मना नहीं है, जो एप्पल यूजर्स हैं वो खुश हो गए एप्पल पे रखेंगे और पैसा देंगे, चलो 200 रुपये 500 रुपये महीना जा रहा है, जाने दो। लेकिन 200 रुपये महीना मतलब, अगर 200 रुपये महीना आप पे कर रहे हो एप्पल को, तो मतलब साल का आप कितना कर रहे हो? 2400 रुपया। और ऐसे 10 साल चले गए, कितना दे और क्यों दे रहे हो? वाई? और फिर वही होगा, वो भी तो एक लिमिट होगी, वो भी भर जाएगी, वो भी भर जाएगी। आप गार्बेज फोटो खींची जा रहे हो खींची जा रहे हो और भरी जा रहे हो, और जब वो भी भर जाएगी तो और एक्सटेंड करोगे पैकेज, और एडवांस पैकेज में जाओगे, अपग्रेड करोगे, अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, कितना अपग्रेड और क्यों? Why don't think about your home setup for data security? पुरानी कोई मशीन पड़ी है घर में तो आप उसको भी सेटअप बना सकते हो। जो आपने ई वेस्ट पड़ा कोई घर में, उसको आप उसको सेटअप बना सकते हो, इसी के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। कुछ नया नहीं चाहिए। कोई पुराना लैपटॉप जिसे आप बेचने को सोच रहे हो, जो बाहर 500 700 रुपये देगा, अरे नहीं, उसी को सर्वर बना के 24 घंटे ऑन करके छोड़ दो,
उसी में 1 TB होगी शायद। 1 TB का कॉस्ट बाहर दो, ये एप्पल कितना लेता है 1 TB का ग्राफिक, ये कितना ले, और वो हर मंथ लेगा, एवरी मंथ यू हैव टू पे। और आप 500-700 रुपए में शायद बाहर बेचाओगे अपना लैपटॉप, है उसी को बना दो ना सर्वर, सेव योर डेटा। और फिर उसमें आप अकेले नहीं, आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी, सबके पास फोन है, सबके पास डिजिटल गैजेट्स हैं, सबको डेटा सेव करना है। आप अकेले थोड़ी हो फैमिली में। अगर आपके 4 मेंबर हैं फैमिली में, तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो एप्पल को या गूगल को, मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो करो, वो पैसा भी तो बचेगा। तो थिंक ऑन सीरियस नोट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोजेक्ट्स। और आप लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर आप कर सकते हो तो अपने फाइनल ईयर में ये प्रोजेक्ट ले लेना। एक प्रोजेक्ट का आइडिया भी दे दिया मैंने आपको, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया फॉर यू। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट, एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. So great, then I think now you are through with this topic also. मैंने मोटा मोटा सारे पॉइंट्स ले लिए एक बार को, but for more details is better you should just go through one by one. Still you face any inconvenience, so tomorrow also we have the session, right? And tomorrow we can go with another topic of MSCI 21, right? तो हम और भी अगर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चेंजेस या कोई ऐसा टॉपिक जो अभी कवर नहीं किया है वो ले लेंगे, है ना? दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर। आपके पास ये है ना ब्लॉग, हाँ अपना अपना प्लीज़ नेम नंबर और डिटेल्स प्लीज़ मेंशन कर दीजिए फॉर योर अटेंडेंस। All right, so I think let us wind up for today, and then see you tomorrow. Okay, sir. Thank you for your time. Hope you enjoyed the Thank you, session. sir. Thank you. Yes. Thank Yes, you sir. all. Thank you.
All right, G. See you. Take care. Then bye bye. See you tomorrow.